Should 50s be recorded in T20 matches? That is the big question. I'll give you a quick reference to the context, and this basically pertains to Tilak Verma being stranded on 49 in the West Indies, and he had his skipper Hardik Pandya at the other end. There were quite a few deliveries left, but Hardik Pandya chose to finish off the match with a six. This became a major talking point. In fact, it blew into a controversy, saying that he could have easily allowed Tilak Verma to reach his first milestone of 50. But the most interesting point for me has been Harsha Bhogle's comment, our very well-known cricket commentator, who basically said, I'm puzzled. He tweeted, I'm puzzled by the discussion around Tilak Verma missing out on a 50. And his main point was that we are far too obsessed with individual achievement within a team sport. That is point number one. And I don't believe 50s should be recorded in individual stats in T20 cricket. And he was absolutely supported by A.B. de Villiers, the South African cricket legend, who said, thank you, finally someone says it. Now, it sounds great, but there are wheels within wheels, and we also know that cricket is a very stats-obsessed game, and we follow, or we sort of categorize a cricketer's greatness on the stats involved. My great friend CS is on the show. CS, your immediate reaction on Tilak Verma being stranded on 49, and what do you feel about Harsha Bhogle's comment? For a change, I stand with Harsha, on this particular, because this is not a debate that is being initiated, right now. Even from the beginning, 2007, 2008, when this was even conceived, everybody was talking about, how many balls a player is going to, get to, score in a T20. Obviously, it's a game of 120 balls. And out of 120, it is a prerogative of a captain of any number 2, number 3 batsman. T20 is not purely about, the openers or number 3 or number 4. It is about the situation. It is about the pitch. It is also about the opposition you are taking on. So in a way, 50 doesn't really matter for any player in this particular game. इसमें 20 बॉलों पे आपने 70 मारे या 30 मारे, उस पे डिपेंड करता है कि आपकी गेम या आपका मैच को आप किस दिशा में लेंगे. And right now, at a time when we are witnessing even a scores of 250 plus so regularly, 220, 250 is so regular, and sometimes it is even touching 300. So look at the kind of जो आपके stakes कितने high कर दिए हैं. So A.B. de Villiers, he knew it because he has played. He's one of the greatest we have seen in the recent times, and they all understand that it is about किस जगह पे आप गए, किस ओवर में गए और आपको कितने ओवर खेलने को मिले. So 50, 20, 30, it doesn't really matter. The only thing matters is how much you have contributed as a player to the team's cause. CS, a quick reference must be made to the Bombay club, which includes great players like Sunil Gavaskar, Dilip Vengsarkar, and so many more. And particularly, let's talk about the batters. And I remember that our production house back in time produced a show called Bat Chat. And among a large number of luminaries on that show, there was the great Bishan Singh Bedi. And he made a very veiled reference to Sunil Gavaskar and to that famous, within quotes, alleged selfishness of a great player that, I must get those the hundreds and so many other stats involved. Now, it's easy to say that, it's easy to attack a great player, but at the same time, how do you define greatness? How do you define a great batter? You define a great batter by the number of runs, by the centuries the person has hit. And even if you talk about Don Bradman, who seems to be the basic trademark, the benchmark against whom every batter is mapped. So what are your views on it? Greatness to me is about which period you have born in. When Sir Don Bradman was there, the greatest we have never seen him playing. But the fact is, whenever you see those clips and all, the bowling standards were not as good or as, of those late 70s or early 80s when West Indies bowling machine was there. So obviously it is about the times. Bishan Singh Bedi, one of the greatest. And one of the very best. Even मुझे आज तक लगता है कोई इतना अच्छा बॉलर ही नहीं हुआ उनके आसपास का. लेकिन point is, look at his stats, 266 wickets.
दूसरी तरफ जो स्पिनर ही नहीं थे, हरभजन सिंह या जो बाकी के कुछ एक ऐसे स्पिनर्स जिनको मैं स्पिनर्स ही नहीं बोलता, कोई चक्कर्स है, कोई कुछ है, उनके विकेट्स ही देख लीजिए 500 400। मुरलीधरन ने तो जेवलियन मार मार करके ही 800 विकेट ले लिए। सो मीन दैट्स अनदर डिबेट। पॉइंट इज, जब गावस्कर ने 36 किए थे इन 60 ओवर्स, दैट वाज द 60 ओवर वर्ल्ड कप, इन 36 उस टाइम पे हमें बचाना था। पॉइंट इज वो मैच में क्या किया, उनकी सेल्फिशनेस क्या थी। पॉइंट इज हम वर्ल्ड कप में कभी मैच ही नहीं जीतते थे। हम एक ईस्ट अफ्रीका के अगेंस्ट एक ही मैच जीतते थे, उसमें 36 उन्होंने करके किसी तरह पूरी टीम को चलाए रखा था। उसको आज गाली दे सकते हो। इट इज अबाउट योर पर्सपेक्टिव, इट इज अबाउट हाउ मच यू हैव फॉलोड द क्रिकेट। But over the years, in my 30 years of experience, or before that, 10-15 years of playing experience, cricket has changed so much. एक टाइम पे हम बेंसन एंड हेजेस जब ट्राई सीरीज देखते थे, 200 में यूज्ड टू बी विनिंग स्कोर, 183 में हम जीत गए थे, 200 प्लस 350, 400, 434 को चेज कर दिया था। मैच वाज फिक्स, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट द पॉइंट इज यू हैव टू स्कोर ना। अगर आप स्कोर ही नहीं करोगे, अच्छा फिर बैट्स चेंज हो गए, पैड्स चेंज हो गए, बॉल लगती थी पैड में, उफ क्या क्या दर्द हुआ करती थी बॉल्स का। आज कुकाबुरा की बॉल जो है, जो 90 ओवर तक आपका साथ नहीं छोड़ती, शेप नहीं चेंज होती। पहले आप गंदी गंदी बॉलों से भी बॉल कर रहे थे और स्विंग भी करवा रहे थे। रिवर्स स्विंग का नाम ही नहीं पता था किसी को, उसको लोग कटर बोलते रहते थे, उसको कुछ भी बोलते थे। दूसरा बोलना शुरू किया सकलेन ने, उससे पहले दूसरा प्रसन्ना कितनी बार मार के चले गए हुए थे, क्या वो बॉल दूसरा नहीं थी। पॉइंट इज, ये आपके चेंजेस आ रहे हैं, आपके मीडिया के साथ साथ, आपके एक्सपोजर के साथ साथ, और विद द टेक्नोलॉजी, विद द फैन फॉलोइंग, ये बहुत से नाम दिए जा रहे हैं। इट इज लाइक पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है ऐसा, एक एक ट्वीट पे हजारों स्टोरियां बन जाती है। पहले तो आप फील्ड पे जाते थे, आप क्रिकेट को फील्ड से कवर करते थे, आज फील्ड वाला है ही नहीं। बीसीसीआई एज एंश्योर्ड आपको WWF दिखाते हैं, आप स्टेडियम में जाइए एक जगह पे बंद कर देते हैं, किसी प्लेयर से ना इंटरेक्शन, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी मर्जी होती है, एक दो पप्पू लोग सवाल पूछते हैं और आपको स्टोरी बना दी जाती है। So point is, cricket Right. has changed, everything has changed. So I think I don't blame Gavaskar, I don't blame any other player. It is about changing But times, I, it is I want about to come back to media you, also. yes, on two very critical points, and I would sort of push you on taking a stand, as you always do. My first point is that when you are talking about cricket being a team game, no matter what the format is, at the end of the day, it is also a story of individual achievement. And how do you define individual achievement? It is what the player has done on the field, which is either scored runs or taken wickets. So that my point number one is that can that be erased? And the second point, quick point, is that Bhogle basically, what he said also was that 50 is not a benchmark in the shortest form of the game. And he said if a player is quick to score maximum runs, then average and strike rate are important. So your quick views on both these aspects. About the second question, it is obviously about your strike rate. T20 में अगर आपका strike rate 150, 160, जो कि सूर्य कुमार, one of the greatest in recent times, वो वनडे में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, but that doesn't take away his achievements in T20. So whether to play him in the World Cup or not, if I am a captain, obviously I'll take his, what kind of strike rate in T20 and still give him a chance in the 15. और यू नेवर नो, किस दिन वो मैच विनर भी हो सकते हैं। अबाउट द फर्स्ट, योर अचीवमेंट्स, आई थिंक अचीवमेंट्स वेरीज फ्रॉम फॉर्मेट टू फॉर्मेट। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हो, ओल्डन डेज जब हम सिर्फ मैच हारते थे, उस टाइम पे सेंचुरी करना, जाकर के लॉर्ड्स में 222 करना वाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। 402 हमने जब वेस्ट इंडीज में, बारबाडोस में जब हमने चेज किया था, आई थिंक इट वाज बारबाडोस, सॉरी अगर गलती हो, तो हमने वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज, गावस्कर ने 200 कर दिया। वहां पर जाकर के आप रन कर रहे हैं, सरदेसाई ने बहुत अच्छे रन किए थे, दिलीप सरदेसाई, वो एक अलग वक्त था, वो एरा ही डिफरेंट था। आपको मैच बचाने सिखा रहे थे, गावस्कर ने आपको मैच बचाने सिखाए, कपिल ने आपको जिताने सिखाए। उसके बाद से बहुत कुछ ऐसा घालमेल हुआ जिसमें सेटिंग भी हुई, फिक्सिंग भी हुई, और बहुत कुछ हुआ, और ग्रेटेस्ट अचीवर्स भी हुआ। फॉर दैट मैटर, सचिन तेंदुलकर वॉज स्कोरिंग एट सच ए पेस और एट सच ए लेवल कि उस 23 इयर्स में उन्होंने 100 सेंचुरीज मारी। 100 सेंचुरीज का मतलब आज कोई तोड़ पाएगा या नहीं, अब तो मुझे विराट कोहली भी आसपास नहीं लगते, जिस तरह का उनका स्ट्राइक रेट है, उनका जो स्ट्राइकिंग। 55 मंथ्स के बाद आपने पहली सेंचुरी आउट ओवरसीज मारा,
तो उस हिसाब से वो ग्रेटेस्ट वन ऑफ द वो थे। लेकिन सेम एरा में इतनी फिक्सिंग भी हुई कि कई बार शक उठता है कि क्या हो रहा था ये सब कुछ, क्योंकि आप तो इंडियन क्रिकेटर तो कुछ बोलते ही नहीं। इंडियन क्रिकेटर तो कहते हैं बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत। लेकिन हंसी क्रोनी ने बोला उनका प्लेन क्रैश हो गया। सो पॉइंट इज, क्रिकेट को पर्सपेक्टिव में भी देखना इज इम्पोर्टेंट। मेरे लिए ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, किस किस एरा में किसने क्या किया। अगर ये इससे ज्यादा कि आपने 100 मारी, आपने 50 मारी, ये सब वक्त की बात है। अगर गावस्कर के टाइम में शायद 3 फॉर्मेट्स होते हैं, मे बी गेम अलग होती। अगर अगर ब्रैडमैन साहब के टाइम में होता तो पता नहीं 500 सेंचुरीज होती, या हो सकता वो मैच ही ना खेल पाते। शायद वो T20 में बिल्कुल फ्लॉप होते और लोग उन्हें कहते कि आप साइड हो जाइए। सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। मुझे नहीं लगता एरास को आपको कभी भी कंपेयर करना चाहिए। इट इज वेरी अनफेयर टू कंपेयर सुनील गावस्कर विद सचिन तेंदुलकर। दोनों का डिफरेंट वो था, लेकिन हाँ एक चीज अच्छी थी कि दोनों ने अपने अपने टाइम में अलग तरह की बैटिंग दिखाई, शैली दिखाई। दोनों का स्टाइल डिफरेंट था। गावस्कर बॉल को छोड़ना दिखाते थे, सचिन उसको मारना दिखाते थे। हर एक का अपना अपना स्टाइल है। Okay, point noted. Now, I'll move on to two very interesting anecdotes, and it is sort of related to what happened to Tilak Verma, whom quite a few people said that, oh, Hardik Pandya should have allowed him to complete 50 runs, and he was devoid of a personal benchmark, of a personal milestone. Now, what are the two other incidents? The first incident that I have goes back in time to March 29th, 2004, and it revolves around the great Sachin Tendulkar. So India was playing Pakistan in Multan, and India had scored 675 runs for 5 on day 2 against Pakistan. Now, the most interesting part here is that Sachin was batting on 194. Sehwag had made a brilliant 309, and the skipper was Rahul Dravid. And then they said the unthinkable happened. Dravid abruptly declared the innings to a close just after Yuvraj Singh got out, and that left Sachin stranded on 194, just 6 runs short. There are many stories behind that, some interpretations about the sudden declaration. And the second incident goes back even earlier in time to the Ashes Test in Sydney in 1995, where Graham Hick was left stranded on 98 runs by his skipper Michael Atherton, and reports say that Graham Hick never spoke to his captain for the rest of the tour, and can you blame him for that? So CS, when it comes to these two incidents, it just shows that a captain put his side ahead of individual achievements. If you were the captain, maybe you would have done that too, and you would be absolutely justified in taking a stand. But till date, Sachin Tendulkar's being stranded on 194 is still talked about. दोनों जगह पे अगर मैं कप्तान होता तो शायद ये नहीं करता, for my own reasons. I've seen these two matches. One on TV, both on TV. Sorry, I was not there in Pakistan. So first में बहुत ही डिफरेंट था राहुल द्रविड़, जिन्होंने कभी एग्रेसिव कप्तानी नहीं की, कभी भी नहीं की है। इनफैक्ट जब विकेट पे जाते थे कई बार सो जाते थे। उनके अनकैरेक्टरिस्टिक जो उनका जो कहते हैं ना कि वो उनकी नेचर ही नहीं थी इस तरह का करने का, तो उन्होंने ये डिक्लेरेशन की। थोड़ा एवरीबॉडी वाज टेकन अबैक, बट अगेन दिस वाज अ टीम गेम. Team management thought about it and they all declared. So that is one point. Sachin को बुरा लगा होगा, obviously it's a milestone and it was a matter, the kind of batting, the way Sachin was batting, it was a matter of another 1 or 2 overs. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था. Sachin was batting quite quick, shots खेल रहे थे. दूसरी तरफ ग्रैम हिक आए. ग्रैम हिक was going through a bad patch. अगर आप देखें, ग्रैम हिक came with a bang. He was such a phenomenal scorer कि सबको लग रहा था ग्रैम हिक आएंगे और सबके रिकॉर्ड तोड़ देंगे. The moment and first उनको कूलिंग ऑफ करना था जिम्बाब्वे से इंग्लैंड के लिए. So those 2 years which he वहां जो गुजारे, उन्होंने काउंटी खेलते और इतने रन बना दिए. लोग बाद में कहते थे इन्होंने इतने रन बना दिए कि अब इनकी भूख ही खत्म होगी. उन्होंने मार्शल के अगेंस्ट भी उस वक्त पे एक डबल सेंचुरी की थी काउंटी में. तो दैट्स अनदर एस्पेक्ट. जब वो क्रिकेट में आए, टेस्ट क्रिकेट में आए, उनका आगाज बहुत अच्छा नहीं हुआ. उनका मिक्स बैग चल रहा था, कभी ठीक कभी, लेकिन जो प्रॉमिस उन्होंने एज ए काउंटी प्लेयर दिखाया था वो उसको रियलाइज नहीं कर पाए. सो वहां पर ये था कि एशेज एंड दैट टू इन ओवरसीज, उनका घर से दूर, वहां जाकर के 98 में ही वाज स्ट्रैंडेड एंड इट वाज वेरी अनफेयर बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट लाइफ एंड डेथ के उससे एक ओवर में कोई फर्क पड़ना था. दैट वाज वेरी हार्श ऑन
ग्रैम हिक प्रोबेबली कप्तान का भी अपना तरीका था कि अब आप ज्यादा फॉर्म में आइए, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होइए, अब Yes, आपको मैं ये देखना चाहता हूँ। Graham बट Hick, अगेन Graham Hick incident, I will definitely make again a reference to the context, क्योंकि जैसे आपके मन में भी बात आ रही है यार 98 में था तो कम से कम 2 ही रन बचे थे, लेकिन माइकल एथरटन के रेफरेंस से अगर आप देखें, so his point was Athers basically said later that he was frustrated by Hick's slow knock of scoring यस 36 runs in 80 minutes on day 4. 80 So 80 मिनट्स minutes यस हो गया कि करीब करीब 1.5 घंटा 1 घंटा 20 मिनट में केवल 36 रन बनाए, लेकिन आई स्टिल अग्री विद यू दैट 2 रन बनाने का मौका तो उनको मिलना चाहिए था। देना। और वो भी उनका स्ट्रगलिंग पीरियड था। मैंने कहा ना एक डिफरेंस है, सचिन तेंदुलकर को फर्क नहीं पड़ा, उनके पास इतने रिकॉर्ड्स थे कि राहुल द्रविड़ आसपास भी नहीं आ सकते थे, उनके एक अपना थॉट प्रोसेस था। लेकिन ग्रैम हिक वाज स्ट्रगलिंग एंड ही वाज ट्राइंग टू कम बैक एंड मेंटेन हिज प्लेस इन द टीम। सो अगेन अगेन ये कहते हैं ना हर एक कप्तान का अपना सोच है, लेकिन दोनों में कप्तानों ने शायद थोड़े हार्श रहे इनके उस पर। और राहुल द्रविड़ को तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कप्तान भी थे कि जिसमें वो ऐसी डिक्लेरेशन वाला उनका अपना मन भी किया हुआ है। अगर खुद बैटिंग करते होते तो शायद 2 घंटा और खेल लेते। Okay, now let's go on to the second part of our show today, and that revolves around the mercurial player called Prithvi Shaw. I have no hesitation in saying that I'm a big fan and I admire Prithvi Shaw for various reasons, and I also feel pretty upset that the way he has been trolled and treated, even a prominent sports anchor on a prominent Hindi channel I saw saying in front of other cricketers, मुझे पता है वो क्या चीज का सेवन करते हैं. Now to malign a player like this is so unfortunate. It is so disgusting. It is beyond words. Yes, but let's talk about Prithvi hitting 244 runs from just 153 balls, which is the 6th highest List A score in the history of men's cricket, and this was done in England when he was playing for Northamptonshire just very recently. And after such a superb achievement, he is trolled for what? That he's fat, that he's bald, that his behavior is not up to the mark, and it is again so disgusting. देखो वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स इन रिसेंट टाइम्स, मुझे नहीं लगता, मैं इनफैक्ट ईशान किशन और शुभमन गिल मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन पृथ्वी शॉ इज अबव एवरीवन. इट्स लाइक Sachin, VVS Lakshman, and Rahul Dravid and Saurav Ganguly, but Sachin much above. So Prithvi Shah was in that class. Unfortunately, as you said, he had some attitude problem. He had some other issues, party issues. इन्होंने अपने आप को justify नहीं कर पाए. But besides that happened with Rohit Sharma also initially. Don't forget that Prithvi Shah और रोहित शर्मा का सेम केस हो सकता है. मीन जो मुझे लगता है रोहित शर्मा भी शुरू में यही था, बहुत कुछ उनके बारे में भी आए, उनकी हैबिट्स, उनका पार्टीज, कैसे लेट नाइट हो रहा, सब कुछ. एंड द काइंड ऑफ टैलेंट ही वाज इन 2006 उसके तो आसपास भी नहीं थे, 2011 के आसपास भी. उनको बनाया गया क्योंकि उनकी बैकिंग थी, उनको जो कहते हैं ना बैकअप किया गया, उनको बनाया गया, उनको फाइनली कप्तान बनाया गया. और ऐसे टाइम में कप्तान बनाया जब वो कप्तान बनने लायक नहीं थे, उनकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क था, उनकी बैक के क्या प्रॉब्लम था, उनकी उम्र की बात थी, हर एक चीज थी. लेकिन मतलब कि टेस्ट में बनता था, लेकिन वनडे और T20 में कभी नहीं बनता था. एनीवे वो सब कुछ है. लेकिन पृथ्वी शाह के साथ तो मैं ये कहूंगा, इफ पृथ्वी शाह इज सो अनफिट या पृथ्वी शाह इज सो मतलब कि फैट या ये सब कुछ दिख रहा है, सो इट्स ए प्रॉब्लम विद NCA, इट्स ए प्रॉब्लम विद योर फिजियो, इट इज ए प्रॉब्लम विद योर ट्रेनर. आप लोग क्या कर रहे हो? क्या आप उनको स्टेरॉइड्स दे रहे थे, उनको प्रॉब्लम चल रही थी? इसका मतलब यही दिख रहा है ना आपकी फिटनेस कैसे आती है, आइदर योर बैड ईटिंग हैबिट्स और स्टेरॉइड्स. ये मैंने बहुत से प्लेयर्स के साथ देखा है, उनका वेट गेन होता है स्टेरॉइड्स के साथ, इंजरी को ट्रीट करने के लिए उनको दिया जाता है. और NCA में कई ऐसे केसेस हुए हैं. तो पहली बात तो उनको क्वेश्चन करना चाहिए कि पृथ्वी शॉ के साथ ये क्या हुआ. और दूसरा, इनके टैलेंट को और इनकी हैबिट्स को शायद मिक्स नहीं करना चाहिए. इमेंसली टैलेंटेड प्लेयर, नहीं कर पाए, नहीं इंडिया में खेल पा रहे हैं, वो अलग बात है. लेकिन जो इनको देखने से मजा आता है, जो इनको देखने से क्रिकेट का शेयर रोमांस जागता है, वो किसी और प्लेयर्स में बहुत कम है आजकल के प्लेयर्स में. तो दूसरी चीज ये है कि और जब आप काउंटी में भी जाते हैं, आई वाज एक्चुअली रीडिंग समबडी, आई डोंट नो, मैं नेट पे पढ़ रहा था, किसी ने बहुत अच्छा, एक फॉर्मर काउंटी प्लेयर ने कहा, some player who has played for India रणजी और सब कुछ,
तो कि जब आप बाहर जाते हो ना, आपको बहुत कुछ अच्छा लगता है। आप जाते हो, सॉसेजेस खाते हो, आप ये आपका वो कहते हैं ना बन खा रहे हो, आप सब कुछ ब्रेड्स खा रहे हो, तो आपको जाकर के कंट्रोल भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि आप घर से बाहर हो, आपको अपनी मनपसंद खाना नहीं मिल रहा है वहां पर, तो आप इन चीजों में ज्यादा पड़ते हो, आपका वेट गेन भी होता है। तो वेदर दिस वेट गेन इज बिकॉज ऑफ दैट और एनसीए ट्रीटमेंट, आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग पृथ्वी शॉ, और हम इनको आपको बताया WWF ही हो रहा है, अब हम लोग तो फॉलो नहीं करते हैं। तो और प्लस अब हम लोग इतना ट्रेवल भी नहीं करते, तो ये किसी को क्वेश्चन करना चाहिए। और अगर एनसीए में जब इनका ट्रीटमेंट हो रहा था, आपके पास इतना सपोर्ट स्टाफ है, तो वहां पर क्या हो रहा है, शायद आई थिंक वो ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बट अबाउट हिज टैलेंट एंड अबाउट हिज 244, आई थिंक द ब्रिलियंट इन नॉक, वन ऑफ द बेस्ट नॉक जो इंडियंस ने वहां पर खेली है, तो उसके लिए अपलॉड करना चाहिए। And where Prithvi Shaw's career is concerned, then it has not been an easy route for him since his international debut in Rajkot in 2018. A brilliant knock he played, and since then he's played only 12 international matches over a 5-year period, and that's horrible for a batter of his caliber. Like both CS and I are saying, and we feel all that happens is now on doping bans, on his public brawl. That also, the way it was twisted, it was made out to be that he attacked some woman when that wasn't the case at all. In fact, there's an influencer who blasted him recently, and under pressure, that guy, he then apologized on social media. The person's name is Ankur Wariku. Now, why target Prithvi Shaw relentlessly is a mystery to me. It is CS again. This is going on the same lines as Sarfraz, where the man hits so many runs at domestic cricket that even the great Sunil Gavaskar stands up for him, but he's still nowhere on the horizon because of apparently his weight problem. देखिए, Sarfraz and Prithvi Shah, very different cases. Sarfraz is a patient player. He has so much of patience, he has so much of, मैं कहूँ, courage, जो लंबी नॉक्स खेलने वाला है। लेकिन जो टैलेंट की बात है, पृथ्वी शॉ के आसपास भी नहीं है, जितना मैंने देखा है। आई एम सॉरी अगर बॉम्बे वालों को ने ज्यादा देखा हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन जितना मुझे समझ आया, मैंने कुछ मैचेस उनके देखे हैं, उनका टैलेंट और पृथ्वी शॉ इज ए नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर। और पृथ्वी शॉ को जब इंजरी भी हुई थी फील्डिंग करते हुए, दैट वाज ऑन द फील्ड, उसके बाद उनको क्यों नहीं वापस लाया गया, या उसके बाद उनको क्यों नहीं तरजीह दी जाती? बाकी जिस प्लेयर को खिलाना है, फ्रिंज प्लेयर्स को भी आप खिलाते रहते हैं। सो एक सिलेक्टर्स का भी एक अपना तरीका है। और दूसरा क्या है कि हर एक प्लेयर का एक अपना, जो कहते हैं ना, जेन्युइन डीएनए होता है। अगर आप राहुल द्रविड़ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वसीम अकरम को यहाँ वाली बॉल पे खेलते हुए और छक्का मारेंगे सचिन की तरह, वो नहीं था। राहुल द्रविड़ का एक अपना रोल था, सचिन का अपना था, और लक्ष्मण स्टाइलिश, विवियन रिचर्ड्स के बाद या मोहम्मद अजहरुद्दीन के बाद जो स्टाइलिश जो वेस्टी प्लेयर हैं, वो तो लक्ष्मण थे, तो उनका एक अलग था। तो हर एक का एक रोल होता है। सरफराज को उनकी फिटनेस से नहीं जानना चाहिए, उनके रनों से काउंट करना चाहिए। और अगर वो फील्ड पे अच्छे नहीं है, सेफ प्लेयर नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा वो कभी जॉन्टी रोड्स हो पाएंगे, या पृथ्वी शॉ तो जॉन्टी रोड्स टाइप थे, ये बुरे नहीं थे। आज इनकी फिटनेस कैसी है मुझे नहीं मालूम, जब देखेंगे सामने तब पता चलेगा। तो उनकी जो फिटनेस है, या उनको स्लिप प्लेयर भी बनाया सकता है, उनको क्लोजिंग फील्डिंग भी करवाया जा सकता है, पर ये नहीं कह सकते कि हर एक आदमी कपिल देव की तरह सेफ कैचर होगा, हर एक व्यक्ति ग्रैम हिक की तरह स्लिप्स में बहुत अच्छा कैचर होगा। हर एक का अपना रोल है, लेकिन उस रोल में टीम के लिए आप कितने बेनिफिशियल है, ये देखना पड़ेगा, जो हमारे सिलेक्टर्स को शायद समझ नहीं आता। खैर, मैंने वही कहा ना कि अगर सिलेक्टर्स के अपने कैरियर्स देखो, अगर अपना उनका आचरण देखो, तो उसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी आएगी। और दूसरा लास्ट चीज जो आपने कहा था कि ट्रॉल कर रहे थे या इनको बोल रहे थे जिस तरह, तो अगर मैं सच में कहूँ, अब तो पार्टीज नहीं हो रही, लेकिन अगर आईपीएल की शुरू की पार्टीज के कुछ तस्वीरें अगर बाहर निकाल दी जाए, तो कुछ एक प्लेयर्स शर्म से डूब मरेंगे, या कुछ एक सिलेक्टर्स या कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटर्स जो ये सब कुछ करवा रहे थे उस रात को, आधी रातों को, तो मेरे ख्याल से क्रिकेट भी बंद हो जाएगी। तो इसलिए इन चीजों पे ना जाकर शेयर उनके टैलेंट और उनका कितना कंट्रीब्यूशन है टीम में, वो देखना चाहिए। On this show, let's also hit upon this aspect as to what defines a game fit player and what defines a fit player. Now, a fit player has been redefined and modeled by someone like Virat Kohli, who all the time keeps showing his gym pictures, and that's a fad which has come on very strongly now. You have the young boys standing in a pool like movie stars, showing off their abs, 6-pack, 8 packs, and I don't know how many more packs.
I don't have a problem with that, but it's a bit strange. And on the other side, you have the West Indies all-rounder called Rahim Cornwall, who has been labelled as the heaviest Test cricketer. He is 30 years old and he has played 10 tests for the West Indies. He has a first-class record of 390 wickets and close to 3,000 runs in just 82 matches. And he has been brutally fat-shamed. In fact, he's gone on to say, I can't change my body structure. I can't say that I'm too tall or too big. All I can do is go out there, back myself and show my skill. So CS, this huge debate about fitness and someone not being fit or someone being bulky, as long as they justify their position on the ground, it should be okay. Absolutely. I think, it all depends on your age also. If you look at, Kapil Dev, fielding at long on, long off, and, mid-wicket everywhere, till the time he didn't become the captain. Once he became a captain, he was a very safe, one of the safest, catchers in the slip cordon, if you remember. Then Azharuddin का भी time आया जब थोड़ा सा कहते हैं ना humiliate भी किया गया. A great player like Kapil, उनको third man भी चलाया जाता था just to show कि बॉस आपकी शायद टीम में जगह नहीं है बट आप रिटायर नहीं हो रहे हो. So this all depends on your captain, your management, and the kind of situation you are going through. But for me, I think it in cricket especially, I'm not talking about tennis जहाँ पर जोकोविच आज भी 11-12 साल के बाद वही खेल रहे हैं जो 20 साल वाला 18 साल वाला जब पैदा भी नहीं हुआ था, जब वो फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जीत गए थे. तो वो देखिए वो एक अलग फिटनेस है. इन क्रिकेट हर एक के लिए जगह है. क्रिकेट में बिशन सिंह बेदी कहते हैं इंडिया गेट बना करके छोड़ देते थे बॉल को. बहुत अच्छे फील्डर नहीं थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि उस वक्त पे उनके लिए जगह नहीं थी. वो भी फील्ड कर रहे थे. चंद्रा बैट्समैन नहीं थे, एक हाथ से ही बैटिंग मैक्सिमम टाइम करते थे. दूसरा हाथ उनका जो पोलियो से ग्रस्त था उतना पावर नहीं दे सकता था. उसका मतलब ये नहीं था कि उनकी बॉलिंग की सिचुएशन में चेंज आ जाता था. उन्होंने भी रन किए, उन्होंने भी टीम को जिताया, और उन्होंने जो अपनी स्किल्स थी आज तक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्यों इनको बोला जाता है? बिकॉज इनकी यूटिलिटी इन द टीम. आज यूटिलिटी शायद चंद्रा को शायद ना खिलाते T20 में, या बेदी साहब को जिस तरह की बॉल करते T20 में शायद बॉल ही ना पड़ने देते. बट मैंने कहा ना, एरा टू एरा डिफरेंट होता है. और प्लस हु नोज, बेदी कुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच विनर इन T20. द काइंड ऑफ बॉल ही यूज्ड टू मूव, जिस तरह से स्पिन करवाते थे, शायद स्टंपिंग बहुत हो रही होती है. सो दिस इज ऑल जो चेंज होता है. लेकिन ये जो लोग आजकल ना जो जिम फिट ज्यादा हो गए, इन जिम फिट वालों की वजह से ही मैं कहूँ क्रिकेट की स्किल में कमी आ गई है. ये जितने भी जिम फिट है, जब एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, जब आप प्लेयर को बढ़ाते हो तो बॉलिंग मसल्स आर डिफरेंट, जिम मसल्स आर डिफरेंट. Right. तो जब पुराने कोचेज जो कहते हैं कि बॉलिंग करके जो मसल्स बनाते हो, वसीम अकरम को सुनिए, इमरान खान को सुनिए, कपिल देव को सुनिए, कि हम नेट में 6-6 घंटा 4-4 घंटा बॉल करते थे, वो मसल बनते थे. ये जो जिम में मसल आप बनाते हैं ये तो डिफरेंट होते हैं. वो ठीक है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं आपकी इंजरीज के टाइम में, रिहेबिलिटेशन में. लेकिन आपकी मैच फिटनेस और जिम फिटनेस आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. आप फोटोज डालिए, सब कुछ, ये सोशल मीडिया का वक्त है. लेकिन एक वक्त वो था जब हम, आपको याद है, मैगजीन से फोटो काट कर अपनी टीम बनाते थे, अपने लिए वो सब बनाते थे, और तब पता चलता था चेतन चौहान की मूछें हैं या नहीं, या एक बड़ी बड़ी मूछों वाला ब्रजेश पटेल भी है, तो हम उसी तरह से उनको देखते थे. Okay, so we'll leave it at that. And since we started with Prithvi Shaw, so I'll end the show by recapping a comment from Prithvi Shaw, who is, according to both of us, and I'm sure so hundreds and thousands of his fans, an incredibly gifted and talented batsman who needs to be treated better. And even after scoring 244 in a county match in England, which according to CS is a huge achievement, and it is, he's still being fat-shamed, he's still being trolled. And the poor guy in the end, and I'll leave you with this remark, he says, डर लगता है आजकल to share my thoughts. अगले दिन social media में आ जाता है, which means that you have pushed a talented guy into a shell. You don't want that person to emerge. And who knows how long his mind will stay strong. We hope it does, and it shouldn't crumble. There are so many other instances of people, of batters, of cricketers, players who are beset with mental illnesses, with mental problems. Prithvi Shaw shouldn't go down that road, we hope, and our best wishes are with Prithvi Shaw. So thanks, yes, and we'll see you again. Just a comment. Just a comment. जब आपने कहा, I remember 2006, a player, emerging player from Delhi, I don't want to name again. These are very personal things. We were staying in a Vijayawada hotel.
और दिलीप ट्रॉफी का मैच था. So he came to me. I wrote something in the paper that time, leading India's paper. कि ऐसा प्लेयर कर रहा है, ये कर रहा है. He came to me. He was just on the same floor. भैया आपने मेरे लिए लिखा, मुझे बहुत दुख हुआ. आप तो मुझे बचपन से देख रहे हो. मैंने कहा तू पढ़ता क्यों अखबार? मैंने कहा बॉस तुझे समझ नहीं आया, ये प्रोबेबली तेरी इंग्लिश और मेरी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट. मैंने यहाँ भी तारीफ की है विद लिटिल बिट पिंच कि तुम्हें ये और एक्स्ट्रा करना चाहिए. मैंने कहा बट एनीवे ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत ले और अखबार पढ़ना बंद कर दे, और स्पेशली ड्यूरिंग द मैच डेज. उसने मेरे को 8-10 साल बाद बताया भैया मैंने आपकी बात पे वो किया, मैं अब अखबार ही नहीं पढ़ता. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ही बिकेम ए वेरी वेरी सक्सेसफुल बॉलर. Okay, CS, thank you for your time. And to all our viewers, Thank we'll be you. back again soon next week with something more interesting like this on this very unique cricket show. Keep watching and send us your comments on YouTube. And if you have any suggestions for any other topics, please go ahead and do that. And we'll do our best to sort of curate the show around that. Thank you and goodbye.